am I? What kind of life I want to live? बार बार एक टर्म दोहराते हैं अपने दिमाग में तो वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है. How will I make that dream meet? I'm not wealthy because मेरे पास एक्सपोजर नहीं है. But it's always about the person who you are. I am really deserving. ये excuse मत दीजिए that I am not capable. You have to be ready, even if you're not ready to transition into the new version of yourself. बहुत ही difference होता है when you believe that you are ready. आपको अपने आप से एक क्वेश्चन पूछना है कि मेरे वैल्यूज क्या है और मेरा कैरेक्टर क्या है. 5 steps to create your own identity, to create the new identity. And hello everyone, this is Meghana Malkan and I'm so happy and excited that you guys are here. आज का टॉपिक है आपकी पहचान, which is your identity. We all have an identity about ourselves. हम क्या है? एक तो अपनी identity होती है the roles that we play into our lives. For example, we are all mothers, daughters, wives, we are colleagues. ये हो गई हमारी physical identity. और दूसरी हमारी पहचान होती है हमारे in our own minds. हमने क्या identity बना के रखी है, अपने आप की छवि क्या बना के रखी है into our minds. That's the question we need to ask ourselves. और once we have our identity, उसके ऊपर एक बात होती है जहां हमारे सपने होते हैं. वी ऑल हैव अवर ड्रीम्स और देयर इज अ लैग बिटवीन अपने ड्रीम्स क्या है, व्हाट आवर ड्रीम्स एंड व्हाट इज आवर आइडेंटिटी, राइट. और ये जो गैप होता है ना, वहीं पे सब मिसमैच होता है क्योंकि सपने कहीं और है और आइडेंटिटी कहीं और जाके बैठी है. वी आर नॉट एबल टू मिक्स देम टू, वी आर नॉट एबल टू अलाइन देम टू. एंड यूजुअली वी ऑल हैव दिस नोशन अबाउट हाउ आवर लाइफ शुड बी एंड वी ऑल कीप वंडरिंग दैट who am I and what kind of life I want to live. There are a lot of these questions going on into our minds. तो अगर हम ये नहीं जांच कर पाते कि हम कौन हैं, we are not able to gauge our identity and that's where the problem lies. That's where वहाँ पे identity gap जैसा बन जाता है. So let's call it an identity gap where we are not able to figure out who am I. आपको क्या लगता है? Are you someone like a go-getter? Sometimes you feel back to back कुछ workout नहीं आ रहा है. Am I a failure? बार बार एक टर्म दोहराते हैं अपने दिमाग में तो वो हमारी आइडेंटिटी बन जाती है. इन माई लाइफ, इन माई एक्सपीरियंसेस, when I try to do multiple things, when I try to switch roles from one thing to another in professional as well as personal lives, मैंने एक चीज नोटिस की. If I'm persistent, I'm able to get it finally. And that's how my new identity became for myself, that I am persistent. And this is my new identity. Now, if I approach things with this identity कि I am persistent, तो पूरा approach ही change हो जाता है. The whole game changes because this Meghna has a new identity called perseverant, right? So ऐसे what is your identity into your mind? I want you to think about that. और सपनों की अगर बात करें, we all have a dream, लेकिन कभी हमें ऐसा होता है कि you're much far away from that dream and something really doesn't feel right. That is again a second kind of identity gap जो हमें महसूस होता है कि वो सपना तो इतना दूर है और मैं यहाँ पे हूँ. How will I make that dream meet? Or many times, when it comes about realizing dreams, most often you hear people talking about why is it they're not able to achieve the dream. मेरे पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं पैसे इसलिए नहीं बना पा रही हूँ, या मैं आई एम नॉट वेल्दी बिकॉज मेरे पास एक्सपोजर नहीं है, मेरे पास वो टूल्स नहीं है जो किसी और के पास है, XYZ के पास है. गाइज, द थिंग इज इट्स नेवर अबाउट द इंफॉर्मेशन और द टूल्स और द एक्सपोजर. It's never about the technical part of it, but it's always about the person who you are. The kind of person that you are, उसी से बनती है आपकी सक्सेस स्टोरी, वेदर हेल्थ से रिलेटेड हो या वेल्थ से रिलेटेड हो. यू हैव हर्ड अबाउट दोज अंडरडॉग्स जिसके पास कोई एडवांटेज नहीं होता है लेकिन दे बिकम सक्सेसेस, दे बिकम वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल ऑन द प्लैनेट. कैसे बनते हैं ये लोग? बिकॉज दे डोंट हैव द टूल्स और इन्फॉर्मेशन एक्सपोजर. ऑल दे हैव इट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द कैरेक्टर एंड द वैल्यूज दैट दे डेवलप, द पर्सन दैट दे बिकम, द आइडेंटिटी दैट दे कार्व आउट फॉर देमसेल्व्स. एक बढ़िया सी एक्सरसाइज है. Think about that version of your identity who has everything you want. You want large amounts of wealth. Your version of identity has that wealth. You want success, you want fame, you want peace of mind, you want love, joy, happiness. That new identity of yourself has everything that you really want and desire out of life. अभी ये जो आपने आइडेंटिटी छवि बनाई है आपके दिमाग में, दैट इज योर जोन आइडेंटिटी. उसे हम जोन आइडेंटिटी का नाम देते हैं कि मुझे ये बनना है, मुझे ये वर्जन बनना है. एंड ऑल दैट यू नीड टू डू नाउ इज टू डू द वर्क टू गेट यू इनटू दैट नई पहचान. वो नई पहचान में आप अपने आप को कैसे लाओगे? बाय डूइंग द वर्क.
इससे it is not something that has fallen ready-made into the hands of all the successful people. ये सारी women को आप देखते हो, बहुत सारी, we read about them and we heard about a lot of success stories about women. Women have built, multi-million dollar companies along with raising their families. आप कोई भी बड़ी वुमन को देख लो, आप beautiful example of someone called Sarah Blakely who started the company called Spanx, जो women innovations बनाती है in US. She is the mother of 4 kids, and along with raising the 4 kids successfully, she has built this multi-million dollar company called Spanx. तो ऐसा कभी नहीं हुआ है that somewhere even she got started. And the day she would have gotten started is the day she would have created this new identity for herself कि मुझे ये वर्जन बनना है जिसके पास सब कुछ है, $1 billion कंपनी भी है, एक हैप्पी फैमिली भी है, बच्चे भी है, a beautiful relationship with my spouse, it goes everything. So that's how it happens. तो आपकी जो जोन आइडेंटिटी है वो छवि दिमाग में रखिए and then do the work that takes you towards that zone identity. तो ये नई जोन आइडेंटिटी हम बनाएंगे कैसे? ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो हमें वहां तक लेके जाएंगे? It may sound really complicated to you, it may feel that way, लेकिन ज़रा भी complicated नहीं है. It's extremely simple. 5 simple steps है जो आप follow करके you can move into that zone identity which will help you create all the wealth you ever wanted to create. Success, जैसे कि टोनी रॉबिन्स कहते हैं, success is all about 80% psychology and 20% technicals. एक बार psychology में shift आ गया ना, then it is very easy to get to, आपको वेल्थ पे मैसिव वो सक्सेस पानी हो या हेल्थ पे पानी हो, रिलेशनशिप पे पानी हो, इट्स ऑल गोइंग टू बी जस्ट 1 step away. 5 simple steps है. Let's go through those 5 steps one by one. Step number 1 is to create the identity that I am deserving. मैं डिजर्व करती हूँ, प्यार डिजर्व करती हूँ, जॉय डिजर्व करती हूँ, अबंडेंस डिजर्व करती हूँ. When you decisively and firmly say these words that I'm deserving, the magic that happens is you are sending out a very strong signal to the universe that I am really deserving. It's like, kind of universe is sitting there observing and saying that, hey, I need to give the wealth and abundance to this person because I know that because she thinks that she is deserving and she actually is deserving. So, it's a kind of signal that goes out into the universe. So many times we just beat ourselves up कि मैं कौन होती हूँ ये डिजर्व करने वाली. Can you ever relate to these words? I can, because I've beaten myself up in the past over and over again. And सारा जो काम करते हैं हम पूरे काम पे पानी फेर देते हैं by saying that अरे मुझे मिल गया इतना पैसा, अरे मुझे ये वेल्थ मिल गई, अरे मुझे सक्सेस मिल गई, मुझे कैसे मिल गई? Do I deserve it? Have I done the work to deserve it? We really undermine ourselves. So I am deserving is a very powerful identity to have. Step number 2 is to say that I am open. I am open की identity हमारे लिए खोलते हैं तो lot of things open up for us. I am open to new ideas. I am open to new ways of learning, of being, of doing things. I am open to all the opportunities that come my way. अगर आप बोलोगे कि यही मेरा तरीका है पैसे कमाने का, यही मेरा तरीका है to create wealth, and if some other better opportunity comes your way, and if you're not open to it, you're in a way rejecting wealth and rejecting abundance, right? There came a point in my time where बहुत ही गोते खा के, बहुत ही losses face करके, finally there came a time where I learned how to trade and make money for myself. And then that was the time जहाँ पे, वो golden समय कह सकते हैं, जहाँ पे everything was right. Trading अच्छा चल रहा था, trading और investing से पैसे आ रहे थे, and comfortable lifestyle हो गई थी because the working hours were so limited. I mean, 9 बजे से 4 बजे. Of course, there was a lot of research that went into it, but it was a very comfortable way of being. But then, new opportunity opened up in terms of helping other people get the same freedom. अभी वो जो नई opportunity आई थी, it came with a lot of work, right? To set up a trading institute was very different ball game than just being a proprietary trader and investor. कैसे सिखाना है, PowerPoint slides बनानी है, institute खोलना है, लोगों को रखना है. It was a whole different ball game. But had I not been open to this new opportunity, I would not have discovered my life's calling. अगर आप open रहते हो, open to new ways of being and open to new opportunities, तो आपकी identity shift होती है that I am open to new opportunities coming my way, और उससे बहुत ही मुनाफा होता है. So think about it कि क्या आप अपनी identity ये बनाने के लिए तैयार है कि I am open, and then accept all the miracles that have to come to you. Step number 3 is to create the identity that I am capable. And if you think you're not capable, go and do the work to become capable.
ये नॉन केपेबिलिटी एक एक्सक्यूज नहीं बनाए अपने लिए सो दैट यू कैन ऑलवेज टर्म इट। जब भी कोई बोलेगा यार व्हाई इज इट दैट यू डू नॉट हैव इनफ कंट्रोल ऑन योर फाइनेंसेस, मे बी आई एम नॉट केपेबल, मे बी आई डोंट अंडरस्टैंड नंबर्स, maybe I've never studied this, I don't understand stocks, investments, कहाँ पैसा क्या इन्वेस्ट करना, I'm not capable enough. That can never be the excuse. Agree if you're not capable, fair enough, there's always a chance to go and get that capability you want. Capability और numbers सीखना, ये सब करना is a learnable skill. You know, एक बहुत ही powerful affirmation which I usually share every time when I talk about this is that I believe in my ability to figure things out. मुझे नहीं पता है, अब भी नहीं पता है, लेकिन I can figure it out. I know how to figure it out, right? So just do the work and get capable. Henceforth, if there's one favor that you can do yourself is, जब भी कुछ भी नया आए, ये excuse मत दीजिए that I am not capable. मुझे समझ में नहीं आता, मेरे में काबिलियत नहीं है. आप अपनी काबिलियत खुद बना सकते हैं, right? Permanently delete कीजिए ये excuse को अपनी life से that I am not capable. You can be capable and you want to be capable. You're open to be capable, right? Step number 4 is to have the identity that I am ready. गाइज, ऐसा कभी कोई समय नहीं आएगा जहां पे आपको लगेगा check 1 check 2 everything is in check, I am ready. नहीं, you have to be ready even if you're not ready to transition into the new version of yourself, ready अगला कदम उठाने के लिए, ready action लेने के लिए, you have to be in the ready zone. जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना, जो स्पोर्ट्समैन को ट्रेन करते हैं, they have a very interesting observation to share कि जब भी वो फिनाले के लिए, you know, when the people are getting ready for finale, what happens is when those sports people, those of them who think that they are ready, इनवेरिएबली वो लोग टारगेट को हिट करके बेस्ट परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं। और वो लोग जो होते हैं थोड़े से डी कॉन्फिडेंट होते हैं, लेस कॉन्फिडेंस होते हैं और लेस कॉन्फिडेंट होते हैं, सॉरी, वो लोगों को लगता है कि मे बी आई एम नॉट रेडी, मे बी मुझे और तैयारी चाहिए, एंड इट इज दे हु ऑलवेज इनवेरिएबली मिस द मार्क। बहुत ही डिफरेंस होता है व्हेन यू बिलीव दैट यू आर रेडी। और ऐसा तो कभी नहीं होगा, यू नो, इवन व्हेन यू रीड महाभारत, even they were not ready, very extremely ready when the war began, but nevertheless they went into it and they believed that they were ready. उनकी पहचान हो गई that I am ready. तो आपकी पहचान अगर आप इसके तले दबाए रखोगे कि I am not ready, I need more time, there'll never be enough time. There'll never be enough, you know, your psychology that says कि अभी मैं तैयार हूँ। ऐसे ऊपर से आवाज़ भी नहीं गूंजेगी कि अरे तू तैयार है, अभी जा मैदान में उतर। It'll never happen that way. You have to decide that you're ready. You have to make your identity in a way that I am ready for whatever comes into my life to deal with it. I'm ready for the next change. I'm ready to take that next step. And that is what works the magic to create your zone identity. And the last step, number 5, और ये बहुत ही important step है, और वो है कि अपनी identity इस तरह बनाना जैसे कि आप believe करते हो कि आप एक role model हो। जो position पे हम सब हैं guys and girls, you know, there are always people looking at us, looking forward to us. अगर आप married हो, आपका spouse is, you know, your spouse is watching you as a role model. Your kids are watching you as a role model. And if you're not married, your siblings, your friends, your colleagues, everybody is watching you as a role model. आपको अपने आप से ये question पूछना है कि मेरे values क्या है और मेरा character क्या है जो मैं दिखा रही हूँ उन लोग को, जो वो देख के मेरे से कुछ सीख रहे हैं। What is it? You know, successful people जो होते हैं, high performing people जो होते हैं और wealthy people जो होते हैं, they always know that they are the role model to everyone around them. Their family, kids, spouse, parents, siblings, their colleagues, their friends, their acquaintances, to the world at large. And that is why वो लोग बहुत ही ध्यान देते हैं अपने values और अपने character पे। वो लोग सोचते हैं before they do anything, and वो लोग intentionally behave करते हैं. They always have intentions about, you know, अपने आप को पूछते हैं वो एक question कि मैं मेरी किस टाइप की एनर्जी लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ या कर रही हूँ. What kind of energy am I putting out in front of people? Because उन्हें पता है कि उनकी एनर्जी का इम्पैक्ट हो रहा है, उन्हें पता है कि उनकी एक्शंस का बहुत डीप इम्पैक्ट हो रहा है. So what is it that you are portraying out into the world? What kind of role model are you playing? और अगर आप, you know, if you have great self-esteem and if you have great self-satisfaction, तो you will portray a much better picture as a role model. और ये self-esteem और ये self-satisfaction आपको आएगा when you are into your zone identity. आप खुद confidence नहीं हो,
आप खुद कॉन्फिडेंट नहीं हो और आप खुद सोच रहे हो कि मेरी आइडेंटिटी तो एक फेलियर का आइडेंटिटी है, या आई एम नॉट केपेबल टू हैव मनी कॉन्वर्सेशंस। अगर एक रूम में जहाँ पैसे की बातें हो रही है मुझे तो बड़ी शर्म आती है, मुझे झिझक आती है, मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। अगर आपने अपनी आइडेंटिटी ये बना के रखी है तो सोचिए कि आप किस टाइप के रोल मॉडल बन सकोगे इन फ्रंट ऑफ योर किड्स और योर स्पाउस और whoever who is watching you, राइट? सो दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पे ये डिसीजन करना है कि क्या मैं मेरी आइडेंटिटी एक रोल मॉडल की बना दूँ। और जस्ट फॉर फन सेक बी ट्रैक, इट्स अ वेरी फन एक्सरसाइज। जस्ट फॉर 1 hour, जस्ट टेक दिस टेस्ट फॉर an hour, जस्ट इमेजिन दैट आई एम अ रोल मॉडल, पीपल आर वॉचिंग मी एंड पीपल आर मेरे वैल्यूज, मेरे कैरेक्टर सब दिखाई दे रहे हैं, मेरी एनर्जी पोर्ट्रे हो रही है, तो मैं कैसे बिहेव करूँ। वो 1 घंटे के लिए भी आपका बिहेवियर पूरा शिफ्ट हो जाएगा। You'll become more responsible and you'll love it. Just try it off, guys. So these 5 steps to create your own identity, to create the new identity, and it works like magic. So go through these steps, guys, and wish you joy and abundance in all you do.